this one simple process will pass your funded account. You can trade on your personal account and you will make your link from this trading only by understanding of this simple process. What is the process? Accumulation, manipulation, distribution. ये process हर एक टाइम फ्रेम पे और एसेट के ऊपर अकर होता है और आप लोगों के सामने ही था, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था. सो आज हम डिस्कस करेंगे accumulation, manipulation, distribution in very detail में with example on every asset. ओके, सो जस्ट स्टे विद मी. सबसे पहले आपके पास क्या आता है? इकोनॉमिक कैलेंडर. एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा इकोनॉमिक कैलेंडर को देख के ही ट्रेड करता है, क्योंकि ये आपको वोलेटिलिटी इंजेक्शन के बारे में मालूमात देता है. वोलेटिलिटी इंजेक्शन क्यों चाहिए? क्योंकि आपने मैनिपुलेशन को घेर के रखना है. अगर आप मैनिपुलेशन को ट्रैप कर लो तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी. मंडे ट्यूसडे यूजुअली एफओएमसी आकर होती है थर्ड वीक, बट मंडे एंड ट्यूसडे डेट वीक इज ट्रिकी, वेरी ट्रिकी. ओके, you will avoid this Monday and Tuesday especially. You will wait for the Wednesday 2 o'clock and 2:30. 2 o'clock first stage manipulation will start and 2:30 the second stage. This is FOMC Fed rate cut. This time Q1 wash will be decide the rate cuts. Okay, so you will wait for the Wednesday. Thursday will be the best day for the trading. Friday you will not trade, it is a bank holiday. The second reason is your quarter will be expire on this day. So the third week of Friday will usually expire the quarter. So this is quarter 2, Q2. So it will expire at the Friday. Okay. First, US 100 cash CFD data, daily time frame capital.com. ये डेटा बिल्कुल नियर बाई होता है रॉ डेटा का जो इन क्यू है. ओके, मैं एक इंडिकेटर ओपन करूँ QT का, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा टाइम का. टाइम क्या है? ओके, ये क्वार्टर 1 है अब द ईयर, ये क्वार्टर 2 है अब द ईयर. अब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 क्या है? एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 महीनों का, और फिर वही 3 महीने 3.25 ऑफ द मंथ डिवाइड होके एक क्वार्टर बनाती हैं. उसकी डिटेल बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये Q1 है. तो जब भी आप किसी नेक्स्ट क्वार्टर में जाओगे तो आपका लास्ट क्वार्टर हाई एंड लो आपकी नेक्स्ट क्वार्टर की तयन करेगा. वो कैसे? मैंने आपको प्राइस साइकिल और टाइम साइकिल के लेक्चर में बताया था, अगर आपने स्टडी की हो. यू सी, दिस इज़ अ क्लियर अक्यूमुलेशन एंड दिस इज़ अ क्लियर मैनिपुलेशन. अब मैनिपुलेशन का यूजुअली लोग जो मकसद लेते हैं कि मैनिपुलेशन को हम ट्रेड नहीं कर सकते. नो, मैनिपुलेशन को आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट लोअर टाइम फ्रेम पे, the higher time frame like daily, weekly, monthly, you can trade it. This is a clear thing. Okay, जब तक आपके पास एक straight away reversal नहीं होता आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, और वही आपकी बाइस होती हैं. बहुत सारे लोगों को मसला आ रहा है बाइस में. So this is your bias. Okay, अगर मैं एक दूसरा इंडिकेटर ऑन करूँ, सिर्फ आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में. ओके, so see, this is the Q1. It is a small box. You see why it's showing a small box? Because there's not a big deal up movement, and this box is big. Why? The reason is this box has a lot of expansions. You see, expansion. So when the market is open and going in one direction, it means that market is capitulating and you need to wait. But at the smaller time frame, you can take the trade. I am talking about the swing trade. Swing trader will wait, but medium and smaller time frame can take the trade in this direction. I am doing day trading like 1 hour 5 minute and 1 minute. अब डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या स्टडी करते हैं? मंथ्स को स्टडी करते हैं. ये जो इंडिकेटर है इसने थोड़ा सा टाइम को डिविएट किया है, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें ज़्यादा अनटिल कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाए, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी इसकी डेटा सही नहीं है. मैं आप लोगों को दिखा भी दे दूँ. देखो, ये है Q2 इस इंडिकेटर के हिसाब से, लेकिन ये वीक 1 है. असल में इन्होंने जोकर वीक को काउंट नहीं किया अपने इंडिकेटर की कोडिंग में, तो इसी वजह से ये इंडिकेटर गलत हो रहा है. एक क्वार्टर ऑफ द ईयर में 13 वीक्स होते हैं, 12 वीक्स नहीं होते. ओके, क्या आप इसको स्ट्रेट अवे डिस्ट्रीब्यूट करो? नो, 13 वीक्स होते, इसलिए आपने जोकर वीक्स को काउंट करना है, तब ही आपकी ये इंडिकेटर कोडिंग ठीक होगी. मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है, अगर ये लोग सही कर ले तो वेल एंड गुड, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट का पता है तो नो वरीज. सो अगेन, डेली टाइम फ्रेम, व्हाट इज़ आवर बायस? We are clearly bullish. If you remember my videos, I will tell you and I will show you. In data, आप क्वार्टर को एनालाइज करते हैं, क्वार्टर्स की डेटा को. So what is the quarter? इस
June. Manipulation and distribution will start. In my opinion, we will mark another high. We will see. If you want it, I already gave you the plan. But I am not a risk analyst. You will do your own due diligence. Okay. What is the next plan for the coming week? This is the weekly high, you see, and this is the weekly low for the US 100. This one candle define everything. And if you see here, it is a new week opening gap. It is passing here, and this is a fair value gap. So जब भी आप एक नेक्स्ट वीक में आते हैं तो आप इस वीक लास्ट वीक के हाई और लो को मार्क करते हैं. वो क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे. देखो ये लास्ट वीक है, वीक 2, और ये उससे पहला वीक 1 है. तो वीक 1 आपको कैसे नज़र आ रहे हैं? इट्स एक्सपेंशन. आई विल शो यू इन वन इंडिकेटर. दिस इज एक्सपेंशन. दिस इज नॉट करेक्ट. This is the correct one, week 1. It is week 1, it is not week 2. But you see it is expanding. So it means we have in the stage of XAMD. So this is accumulation for me. We will wait for the manipulation. What side we will wait? For US 100 and for US 500, you will wait either the high or low or first and revert on the crack in correlation either. And the second option is you will wait for this fair value gap. If the market goes above and use it as a support, you will take the bullish bias and you will target this one. I gave you the game plan. Again, I am not a risk analyst. Okay, so 4 hour time frame, you study the accumulation, manipulation, distribution. How? आपने पिछले वीक को देख लिया, आपने उससे पिछले वीक को देख लिया, आपको पता चल गया कि क्या होने वाला है नेक्स्ट. आप क्या assume करोगे? Expansion. Why? What is the reason? The reason is last week is accumulating. 4 hour time frame, आप डेटा between the week study करते हो, but आपके माइंड में accumulation, manipulation, distribution का फ्रासिस होना चाहिए, तभी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे. जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी बहुत पहले, तब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि 4 और टाइम फ्रेम पे अगर मैं पिछले वीक के हाई और लो को मार्क करूँ तो इसका क्या मतलब है. अगर उधर क्रैक बन जाए तो क्या हो जाएगा. व्हाट आई विल टेक द ट्रेड एंड यू विल लूज. व्हाई? सो आई विल टेक द ट्रेड और नॉट. दिस इज द क्वेश्चन कमिंग अगेन एंड अगेन टू माई माइंड. बट फॉर यू इट इज़ ईजी because at that time accumulation, manipulation, distribution is not in my mind. So when I understand the accumulation, manipulation, distribution, everything is very easy for me. So this is the example, real lifetime example I give to you. Okay, now 1 hour time frame. Okay, 1 hour time frame, you will see the data between the days. Got it? How you will analyze the data between the days? You have process, accumulation, manipulation, distribution, XAMD, AMDX. Simple, clear. देखिए Monday it is accumulating. Tuesday it's manipulating and distribution is started. I didn't take this trade and there is a crack. If you see the US 500, there is a hidden SSMT and there is SSMT the US with US 30. Okay, so there is a crack. I didn't take this trade because this is against my bias. I take trade here at the Thursday and here at the Friday. Why I didn't take this trade and this trade? The main reason it's against my bias. I will stick to my bias, my daily bias. What is my expectation for the coming week? We will study and we will see. This accumulation, अगर ये first इस तरफ को फर्ज करता तो मैं straight away trade लेता in specific time. Specific time is very important. Time of interest 9 to 10:30. It's important. Keep in mind. So it's accumulation, manipulation, distribution, and then reversal. Q4 usually designed for reversal. 15-minute time frame, you will see the data between the session. How you have process, accumulation, manipulation, distribution. Asia accumulating, London manipulating, but it is manipulating on both sides. So when one session manipulating on both sides, it is accumulation for the next quarter. Okay, ये हाई और ये लो की वैल्यू होगी, फिर इसकी वैल्यू नहीं होगी. तो ये हाई और इस लो को आप मार्क करो कि जब भी ये हाई और इस लो को आप मार्क कर लो कि जब ये सेशन ओपन हो जाएगा, इस कमिंग डाउन. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मैनिपुलेशन एंड इट्स कमिंग 9:45 एंड आई टेक दिस ट्रेड. ओके, एंड आई टुक दिस ट्रेड and it is one of the beautiful trade I take. And I took this trade and it is one of the beautiful trade. I took it. Why? There is a two-stage crack correlation. There is PSP. There is accumulation manipulation process. If you know accumulation manipulation process, SSMT will help you. If you didn't know, SSMT will not help you, because there is a lot of SSMTs occur in the live market and you will know what is going on.
So this is the key points you need to take. Okay, S&P 500 4-hour time frame. First of all, going to the live chart, you need to study the last 2 weeks at least. Week 1, week 2 is expansion, is accumulation. So what you will do, you will wait for the manipulation on either side. मैनिपुलेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि एक साइड को पर्च किया और SMT बन गई तो आप स्ट्रेट अवे ट्रेड लो. नो, यू विल वेट. अगर सारे एसेट पे पर्च हो गया इंक्लूडिंग डॉलर, सो यू विल यूज डेट हाई एज ए सपोर्ट. ये फेयर वैल्यू गैप भी है साथ में. अगर इसको एज ए सपोर्ट यूज़ करें तो आप फिर इसको टारगेट कर सकते हैं और ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा. लेकिन अगर इसको एज ए सपोर्ट नहीं लेता और फिर नीचे आता है तो आप इसको टारगेट लोगे. ओके, और हमारा ये क्वार्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है. नेक्स्ट एग्जांपल 1 आवर टाइम फ्रेम accumulation manipulation example. Okay, next accumulation manipulation example 1 hour time frame. This is a Monday accumulating. So accumulating and then manipulation occur, distribution started, distribution happen, distribution started, distribution happen. Q4 is designed for reversal. जिसका ये मतलब नहीं होगा कि हम सिर्फ Q4 का वेट करेंगे. You will study AMD X AMD. If it is expanding, I will wait for Tuesday to accumulate and then Wednesday I will take a trade. Right? So I took trade here and here, and this is I think one of the best trade. 1 hour time frame. Now you will go to the 5-minute time, 15-minute time. Now we will go to the 15-minute time frame. 15-minute time frame, you will see data between the session. If both high and low of the session is taken, then the session which take the high and low of the last session, it is accumulation for the next session. So this is accumulation for the next session. This high and this low has value from this high and this low. So manipulation occur here. I took this trade and this is one of the beautiful trade. I take it. Okay, 5 मिनट पे आप 90 मिनट साइकिल को स्टडी कर सकते हो. 5 मिनट पे आप 90 मिनट साइकिल को स्टडी कर सकते हो. तो इसे Q1, this is Q2, this is Q3. Again both side is taken. So this high and this low is your accumulation. Next manipulation occur, you take this trade. Now coming to the gold का अगर ये वाला, now coming to the gold में weekly time frame पे COMEX की data. Now coming to the gold future data weekly time frame COMEX. This is the raw data of the gold. Okay, अगर आप इस box को देखें और इस box को देखें, this is a clear difference. This is expanding and this is accumulating. So what you will do the next quarter will be expanding for sure. So you will wait for the swing low to form. Swing low को कैसे कंफर्म करते हैं? क्रैक इन कोरिलेशन से, प्रेसिजन स्विंग पॉइंट से, टाइम से. दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स. ओके, सिल्वर को देखिए. सिल्वर डजंट टेक द लास्ट क्वार्टर लो. आई टेल यू अबाउट दिस अर्लियर. आई विल शो यू here. So you will tell you weekly frame gold is also is 2 gold weekly time frame. I tell you we are held in this 2 points. Silver same. Daily time frame gold is also coming down until unless the cracks found between these two, silver and gold, you didn't know either we are bullish or bearish. And you watch this clip. This is the thing I am telling you from the last months. Okay, so on daily time frame you will see this last quarter low is taken in this, but you will wait because nearby the next quarter is starting. So specifically I am waiting for the next quarter which will be start from July. So you also need to wait. Okay, because if the swing formation is confirmed here, so the next quarter is for sure certain it will be expansion and you will target the high or the lows. At specific time you will study the macro market like the deal between Iran and US. This is also important. If you didn't study that, you need to study that. Okay, so here I will show you one thing more. You see this is the low and this is the low. You will not see until you will go to the weekly time frame. This is the low and this is the low. So this is not a
precision swing point. That's why I'm waiting. You need to also wait. There is a crack and correlation, but there is no second stage crack and correlation. You will wait for the second stage crack and correlation unless you will do nothing, like I told you. So the example you understand from the weekly time frame: accumulation, manipulation, distribution. Usually gold follow weekly, daily, 4-hour cycles. You got my point. वीकली पे हम क्वार्टर्स ऑफ द ईयर को स्टडी करते हैं, डेली पे हम मंथ्स को स्टडी करते हैं, डेटा बिटवीन द मंथ्स, 4 आवर पे हम डेटा बिटवीन द वीक स्टडी करते हैं. तो अगर इन तीनों में आपको क्रैक मिलती है तभी ही आप गुड टू गो हो. बिटकॉइन एंड इथेरियम, अनदर एग्जांपल फॉर अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप बिटकॉइन की फ्यूचर डेटा को देखें मंथली टाइम फ्रेम पे आप ईयर्स को स्टडी करते हो. सो दिस इज 2025 ईयर लो and this is now 2026. If you see, it is completely swept. Okay, but what about Ethereum? Ethereum didn't sweep it. There's something going on under the table and you need to watch it. इसी से आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है. ज़्यादा लोग जिस साइड पे होंगे उसी साइड पे मार्केट नहीं जाएगा. इट्स फॉर श्योर थिंग. ओके, फिर आप वीकली टाइम फ्रेम पे क्या स्टडी करते हो? वीकली टाइम फ्रेम पे आप क्वार्टर्स को स्टडी करते हो. सो दिस इज द लास्ट क्वार्टर which was expansion, and this is the current quarter, it is accumulation, but it is purged. What about Bitcoin? Bitcoin also purged. So it mean मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्रैक है लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास क्रैक नहीं है. तो ये एक स्किप भी कर सकता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको फिर डेली टाइम फ्रेम पे क्रैक चाहिए. फॉर एग्जांपल मंथली टाइम फ्रेम क्रैक, then daily time frame crack, or monthly time frame crack, weekly time frame crack, daily time frame crack. Daily time frame you study the data between the months. So July will start nearby and you will study it. Okay, so you understand the example of Bitcoin and Ethereum. Now this crypto guy will be in the happy mood. Okay, dollar index, I will show you something important, very important. This video is very important. Okay, dollar is held between these 2 points, just like I told you about the gold. But if it is held, you cannot trade. No, you can trade. If you see, this is Q1, Q2, Q3, Q4. So Q1 is accumulating. Yes, it's accumulating. Let's take both sides. Yes, so it is accumulation for the next cycle. Yes, so this is again manipulation. Distribution started here. Q4 is designed for reversal. You will study, you will use your mind and understand this. This is the best example. Okay, weekly time frame, it is accumulating. So the asset which is accumulating more in this trade will give you the more expansion from the trade, and you will trade that. Okay, daily time frame, you will study the data between the months. There is a crack between the months. Go and study by yourself. Either I will show you. You see, there's a crack between the months. That's why it is expanding. This is the reason. अगर आप इसको नहीं समझ सकते तो ना समझें. सिर्फ और सिर्फ क्रैक आपको फ़ायदा नहीं देगा जब तक आप इसके बिहाइंड फ्रासिस को नहीं समझते. ये क्रैक बाद की चीज़ है. सबसे पहले चीज़ ज़रूरी है वो है accumulation, manipulation, distribution, the power of 3. So if you understand these points, I will give you one tip. In the dollar, euro, Great British Pound trade, you will give you more value to a dollar and euro. In the index future, you will give you NQES, and the crypto, you will give you more value to the Bitcoin and Ethereum, and the gold, you will give you the gold and silver. Okay, in the bond market, you will give you the T-bond and 10-year. Okay, got it. So I hope you find some value in this lecture. I will show you the examples of accumulation, manipulation, distribution, and real-time data, not showing the first example 100 years ago. So if you like this kind of videos, let me know, and I will meet you in another lecture.